शहर में जो सबसे अहम चीज़ है वो है वहाँ की जो ज़िंदगी है, वहाँ का लाइफस्टाइल है। जब छोटे थे तो हम देखते थे कि इस्लामाबाद फैज़ाबाद एयरपोर्ट से आगे नहीं था और दूसरी तरफ G9 G10 से आगे नहीं था, और बाराकऊ जो आज एक बहुत बड़ा पार्ट है इस शहर का, वो बहुत छोटा सा एक सेटलमेंट एरिया था वहाँ पे सिर्फ। Cities are where development happens. And cities are the most important place where development happens, because cities are where innovation happens, cities are where the labor force is, cities are where the industry is, cities is where retail is. बट जो सबसे ज़्यादा कंसर्न की चीज़ है वो ये है कि इस्लामाबाद जो है या इस तरह के हमारे जो दूसरे शहर हैं, ये हॉरिजेंटल एक्सपेंशन है, अर्बन स्प्रॉल है इनका। आज अगर हम इसका GIS अगर हम मैप क्रिएट करते हैं, देखते हैं, तो जो ट्रैवल टाइम है सेंटर से लेके एक कोने तक, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। Pakistani planners think city is a big sprawl. What is a sprawl? Sprawl is a spread out city. If you have that kind of a city, the city is probably about 30-40 miles wide. If you have that kind of a city, you have to spend all your day in the car. घर से निकल के आगे 5 मिनट्स की वॉक है, वहाँ से वैन मिलती है और उधर से फिर आगे मैं मेट्रो स्टेशन तक जाता हूँ, सदर वाले मेट्रो स्टेशन तक में, और उसके बाद 7th एवेन्यू वाले स्टेशन तक जाना होता है मेट्रो के, और उसके बाद आगे 20 मिनट्स की वॉक है, मैं रिफा यूनिवर्सिटी पहुँच जाता हूँ। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसमें 1 आवर एंड 30 मिनट्स लग जाते हैं। वो 2 घंटे जो वो शख्स अपनी गाड़ी में गुजार रहा है या किसी ट्रांसपोर्ट में गुजार रहा है, वो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें वीकली बेसिस पे, आप इसको मल्टीप्लाई करें मंथली बेसिस पे और एनुअल बेसिस पे, तो ये बहुत ह्यूज कॉस्ट है। इट्स अ कॉस्ट अबाउट मनी, इट्स अ कॉस्ट रिलेटेड टू स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, as well as जो आपका टाइम कॉस्ट इसने आपको किया है। And then of course when you have cars traveling, you have the pollution that Lahore has. Lahore pollution is unlivable. It's going to kill a lot of people, right? हमारी जो अर्बन डेवलपमेंट है उसमें ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर जो फोकस है, दैट इज़ डिसकनेक्टेड फ्रॉम द ह्यूमन डायमेंशंस, दैट इज़ डिसकनेक्टेड फ्रॉम द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स। In a sprawl also, it is very hard to give public services because they're too far apart. So building sanitation, building water supply, all those things become very expensive. And we are trying to preserve parks outside the city. Parks have to be inside the city, small parks, so we can all enjoy them. हमारे मोहल्ले में इधर इतनी जगह तो नहीं है, इसलिए हमारे आसपास गलियां हैं, हम उधर अपनी साइकिलिंग चलाते हैं, क्योंकि वहाँ कुछ खेले तो गटर है हर जगह, तो वहाँ बॉल चली जाती है। हमने रिसेंटली पाइड में एक रिसर्च करवाई मेट्रो बस के ऊपर। उसमें हमने ख़वातीन की मोबिलिटी को उसमें हमने मेजर किया उसके अंदर, कि आपके पास बसेस का ट्रेंड तो है ही बहुत कम, आपके पास ज़्यादातर वैन्स चल रही हैं, रिक्शे चल रहे हैं, इस किस्म की आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है। उस ट्रांसपोर्ट के अंदर वुमेन फैक्टर कहीं एड्रेस्ड नहीं है। और जहाँ तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात है, तो मेरे लिए वो बिल्कुल सहूलत मेरे लिए है ही नहीं, बिकॉज़ करीब तो कहीं है ही नहीं जहाँ से मैं बैठ सकूँ। फिर वहाँ तक मुझे कोई ना कोई मुझे ड्रॉप करे सुबह पहले, फिर आप वहाँ खड़े रहो, ऊपर से आप अकेले होते हो, सुबह का भी टाइम होता है, तो आप खड़े रहते हो। फैमिलीज़ के लिए भी ये बहुत परेशानी की बात होती है कि उनकी बेटी जा रही है अकेली, फिर आधा घंटा खड़ी हो रही है, उसको सीट मिले ना मिले, गाड़ी मिले ना मिले। देखिए जी, अर्बन ट्रांसपोर्ट प्लानिंग इज सिंपल। यू हैव टू थिंक ऑफ पीपल एंड नॉट इंस्ट्रूमेंट्स। एवरी टाइम देयर इज अ ट्रैफिक कंजेशन, we want to increase the number of flyovers or underpasses. So we at PID have looked at the cost of sprawl, we have looked at the cost of all this thing, and we say 1% people are driving, all this infrastructure is being built for 1%. So the point is that you are inconveniencing people by building these things, you are spending money by building these things only to facilitate the car. इस्लामाबाद के अंदर हमारे पास रोड्स के ऊपर राइट ऑफ वेज एग्जिस्ट करते थे, आपने ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ले डाउन किया, बट हमने क्या किया कि हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाने के ऊपर इन्वेस्ट कर दिया। मेरे बचपन में चीज़ें जो हैं वो बहुत सिक्योर थी। स्कूल खुद जाया करते थे, खुद आया करते थे, हमारे स्कूल एक्सेसिबल थे, हमारे अस्पताल एक्सेसिबल थे, हमारी सड़कों पे वो रश नहीं था। मेरा दिल तो बहुत चाहता है कि मैं पैदल जाऊं या साइकिल पर अपना जाऊं, इधर उधर दोस्तों के साथ खेलूं, मगर हम खेल नहीं सकते क्योंकि यहाँ ट्रैफिक बहुत होती है। तो दुनिया में कॉन्सेप्ट दिए गए हैं 15 मिनट सिटी का, 30 मिनट सिटी का, 60-90 मिनट सिटी का।
ये बेसिकली डिफ़ाइन करता है कि विद इन दिस टाइम तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी इंक्लूडिंग मेरा जो दफ्तर है और जो चीज़ें हैं जहाँ पे मुझे डेली का कम्यूट करना है, वो तमाम चीज़ें मिल के वो उसको डिफ़ाइन करती हैं कि ये कितने मिनट के अंदर अंदर हम सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं. What we need in Pakistan is not roads, but an urban mobility policy. We need to move to compact cities, and compact cities have to be based on the kind of thinking that PID has given you. So inner city mobility has to be defined as first walking, because it begins with walking. In inner cities people walk a lot. After walking, the second most important thing is bicycling. After bicycling, the third most important thing is the elevator going up and down between flats and shopping malls. After that come the public transport. Cars are the last thing, because one car is for one person and a bus can take the space of 5 cars but hold 100 people, and walkers, about 500 of them can walk in the same space. हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत बुरे तरीके से सफ़र कर रहा है. हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है जो कि बहुत कीमती लैंड है वो ख़त्म करके वहाँ पे घर बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं, वहाँ पे ये सारा कुछ किया जा रहा है. Recommendations to fix the system. First thing, housing societies, ban them. We should think buildings, let agriculture remain in the rural area. बेसिकली पहले तो आपने अपने शहरों को ये रीड करना है कि मेजर डेंसिफिकेशन या इंटेंसिफिकेशन ऑफ बोथ पॉपुलेशन एंड एम्प्लॉयमेंट किस जगह पे है. फिर आपने वो सारे के सारे कॉरिडोर्स लिंक करने हैं. Compact means people should be living in flats, high-rise buildings, and they should be walking. Sequence ये कि पहले आप गाड़ी को कम करें, पैदल बनाने की जगह, पैदल चलने की जगह दे, साइकिल चलाने की जगह दे, उसके बाद बस चलाएं, और बस उस एरिया में चलाएं जहाँ फ्लैट्स हैं, जहाँ लोग हर स्टॉप पे 50 बंदे आकर रुकेंगे. हमें डेंसिटी चाहिए. डेंसिटी का मतलब ये कि 1 एकड़ में बजाय आजकल जो 20-25 बंदे रहते हैं, 1 एकड़ में हज़ारों बंदे रहे. जो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है वो हमारे रहन सहन के तरीके के साथ लिंक्ड है. अगर हमारा रहन सहन का तरीका ये है कि हमने फैलाव में रहना है, तो आपकी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी एक ही है, गाड़ी में जाएंगे और कुछ नहीं तरीका. सो वी हैव टू मेक श्योर दैट द कार इज लिमिटेड. हाउ डू यू लिमिट द कार? यू हैव पार्किंग चार्जेस, you have congestion charges, you have road use charges, like if you want to go fast, you have these signal free corridors, etc. Charge them for it. Why should the pedestrians subsidize them? Can you imagine we have free parking? Nowhere in the world do you have free parking. We have to have parking charges. As we've done this in Islamabad, we've given the plan to the CDA, because quite frankly the street is public property. The street is mine as well as yours as well as everybody else's. Then for the pedestrians have rights on the street. Street is not just for the car. There must be pedestrian crossings, there must be bicycle lanes, there must be wide street sidewalks. अगर हम इस चीज़ पे आमादा हो जाते हैं कि हम सब ने मिल बैठ के मसाइल का हल करना है, तो उसमें कोई शक की गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी कि हम हल ना कर पाएँ. हम यकीनन उनको हल कर सकते हैं. हमें अपने शहरों को री-एनविजिज करना है, हमें सोचना है, एंड आई होप द यूथ ऑफ पाकिस्तान कैन थिंक अबाउट दीज थिंग्स. माय जनरेशन कुडंट.